Hello, friends. Today we are going to start a poem written by Fob Carey. We are going to start a poem of Beehive textbook, page number 65, and the name of the chapter is The Legend of the Northland. Then, now, in this poem, what is this? That away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they can't sleep them through. In this chapter, it is describing the weather, the experience of the people of the Northland areas, where the snowfall, like in our India, we can say the Jammu Kashmir super wala air over here, that we all know in the winters or in northland areas the day are few, the day are short because sun sets very fast, very earlier, and the nights are so long in the winter. Then if we wake up at 6 p.m., there will be the night, the moon, the black sky would be observable. But in the summers, if we wake up at 6, the sunlight will be starting, the sun will be starting arising. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. Now here नॉर्थलैंड में बहुत स्नो होती है, इसलिए वहाँ पे स्विंग रेनडियर से स्लेजेस पे घूमते हैं. तो वही रेनडियर पे स्लेजेस पे जब घूमते हैं तो उसमें बच्चे जो होते हैं ठंड की, मतलब ठंड से बचने के लिए जैकेट्स पहनते हैं, और जैकेट्स होती है बहुत फरी, और वो छोटे छोटे बच्चों पे फ़नी लगती है. और फरी क्या होती है, उनको देखते ही बियर याद आ जाता है, इसलिए उनको बियर लाइक उन, और वो छोटे बच्चे होते हैं इसलिए बियर के कब्स बोला हुआ है चिल्ड्रन को. और यहाँ पे इन देयर फनी फरी क्लोथ्स ये यूज़ हुआ है. और अब यहाँ पे अब हमारा रियल पोएम शुरू होती है. ऊपर से ये द टू पैराग्राफ्स वर द रियल पोएम, and now we are going to start the real poem. Now the real poem is that now Fob Carey is telling us a poem. It's true or false. Poet even don't know, but we shall read the chapter. In this poem, what it's a story that once a good Saint Peter was there. He was living in our own earth, in our old world, and what happened that he was just walking and preaching over the areas, and we all know what saints do. They walked and preached, and just as he did, we know all, he came to the door of a cottage, and as he was traveling round the earth, he came to the door of a cottage where a little woman is that a woman was there, but because of her small height, they are saying that of woman, a little woman, small height woman. Then and he was she was baking the cakes, and were baking them on the hearth. Hearth is like now तवा और माइक्रोवेव आ गया, लेकिन पहले हर्थ हुआ करते थे. और अब यहाँ पे ये जो थे, ये ऐसी सत्संग से आ रहे थे तो उनको भूख लग रही. नाउ अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक वुमेन है, स्मॉल हाइट की है, वो भट्टी पे केक बना रही है, बेक कर रही है. तो चलो मैं उससे एक पीस केक ले लेता हूँ, मुझे मना भी नहीं करेगी. लेकिन ये जो लेडी थी ये बहुत सेल्फिश थी, और सेंट पीटर ने बहुत भूखे थे और उनका ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि क्या तुम अपने केक के स्टोर से मुझे एक सिंगल पीस दे सकती हो. देन सी देन सी देखते हैं कि उसने क्या जवाब दिया. वॉट शी सेड दैट ओके आई विल गिव. देन उसके दिमाग में क्या चलता रहा, इसने तो छोटा सा ही तो टुकड़ा माना है, इसको छोटा सा एक पतला सा छोटा सा केक दूंगी.
तो और वो उसी की कोशिश में लगी रही। उसने सबसे छोटे से केक बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो जितना जब वो बना रही थी तो होगा 1 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर की हाइट का और विड्थ का, लेंथ का वगैरह का पूरा सर्कल। बट अगर वो बेक आके आएगा तो 1 की जगह 10 का हो जाएगा। बस वही। अब वो इतनी फुलिश थी कि मतलब वो इतनी सेल्फिश थी कि वो इतना इतना ऐसी चीज़ें भूल गई कि बेक होने के बाद तो केक बड़ा होके ही आएगा। तो अब उसको अब ऐसी वो करी थी, स्मॉलर स्मॉलर, आई वांट अ स्मॉलर वन, बट इट लुक दैट शी टर्न्ड ओवर इट अ लार्ज एज अ फर्स्ट हैड डन। वो बार बार उसको रोल्ड करी जा रही थी, फ्लैट बनाई जा रही थी, छोटा बनाई जा रही थी, वेफर की तरह बनाई जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बढ़ा ही आ रहा था। And for she said, my cakes that seems too small are yet too large to give them away. So she put them on the shelf. एक एक करके बनाई जा रही है, अरे ये तो बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, इससे भी छोटा मैं बनाऊंगी, इससे भी छोटा बन सकता है। उसने बोला बस एक पीस चाहिए। अब वो थे नाइस गुड सेंट पीटर, एंड ही grew angry, and for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब वो इतने भूखे थे और उस वुमेन को देख के उनको इतना गुस्सा आया कि एक उसकी एक ऐसी सेल्फलेसनेस भी इनफ थी सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए। वो पहले ही पहचान गया था कि हाँ ये थोड़ी सेल्फिश है, लेकिन तब भी उन्होंने उससे मांगा। एंड अगर यही होता कि उसको एक बड़ा केक भी दे देती, एक पूरा पेस्ट्री का पीस दे देती, तो क्या हो जाता, एक उसकी ब्लेसिंग्स ही तो मिल जाती। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, नाउ ही प्रोवोक she provoked the saint, and saint felt grew very angry, and he said that you are far too selfish to dwell into the human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब वो कहते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें इस ह्यूमन शरीर में, इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे तुम्हें फूड शेल्टर और वार्म, तुम्हें अभी ऐसे सर्दियों में वार्म सब मिल रही है। तुम्हें बर्ड्स की तरह बनना चाहिए, तो बर्ड से कुछ सीखो। वो खुद अपना घर बनाती है, फूड खुद अपना ढूंढती है, और ड्राई वुड के आसपास रहती है, तो तुम्हें मैं बर्ड ही बनाऊंगा। और जैसे उसका ये पूरा ड्राई वुड ख़त्म हुआ, ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जैसे उसकी सेंटेंस ख़त्म हुई, एंड व्हाट हैपन, अ वुडपेकर, उसके सामने से चिमनी से निकली एक वुडपेकर आई, और वुडपेकर निकल के चली गई। और वो कैसी थी, उसके सर के ऊपर, उसके हेड के ऊपर, टॉप, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी। नाउ द दैट लेडी वाज चेंज इनटू अ बर्ड, दैट द woodpecker was changed into a bird, the lady. She had a scarlet, the chef cap, you can say. She was had a chef cap on her head, and that was left the same. Rest of the clothes were burnt, and rest of the clothes जो थे वो burnt हो गए थे, but her uh, the her cap was left black as a coal in the flame. अब उसके अगर वो अपने क्लोथ्स को देखना भी चाहती तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पूरी ऐश बन गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब वो ऐसी नाउ लाइक अ बर्ड शी वॉज रनिंग हर लाइफ, देन अदर स्कूल बॉयज सी यू दैट what kind of bird is this, a bird with a scarlet cap? So they were all excited, or a little bit of थोड़े हैरान and Stungish. Has seen her in the wood where she lives in the trees till this every day, boring and boring for food. अब वो क्या करती थी, अब वो पेड़ों पे, she lived on the trees for full day, she lived on the trees, boring and boring for food. And now here our chapter ends. Now, this is the glossary. The legend of the Northland it's an old traditional story. Now we can conclude that it's a story and it's a fake story. It's not a real one. Saint Peter is who? Saint Peter as an apostle of the Christ. Provoke, to make angry. These were the three main around the difficult words. Then here now this poem is said to be a ballad. Ballad. What is a ballad? Ballad is a song narrating a story in short stanzas.
stanzas. Now, I said that we are going to start a new poem, but it was like a story. So, a poem like a story in small stanzas is known as a ballad. Ballad are part of folk culture or popular culture or passed on orally from one generation to next. Legend of the Northland is a ballad. This is a perfect explanation for that. Do you now here the poet was asking that I also don't know that it's a true or a false story, it's a tale or a real one. So we can say it's a tale because it's a ballad, and ballad is just a folk culture, popular culture, passed on orally from one direction to another. Now over here, now now we are going to discuss the rhyming scheme of the poem. Then now the rhyming scheme of the poem is A B C B. This is the rhyming scheme. For example, if we see the first para, it is the last words are Northland, few, winter, and through. The Northland A, few B, winter C, and few and through are a little bit same. So few was B. The letter for few was B. So for the through it would be B. And in that in the poem, the first the first stanza about the temperature of the Northland areas. Now if we talk about some the poetic devices in this chapter, so the poetic devices are alliteration, simile, repetition, hyperbole, embellishment, anaphora. Now, what are these? Uh, Alliteration, we all know the repetition of the first letter of the words in a same line. Repetition is the repeating whole. Alliteration is for the letters, and repetition is for the word, proper word. For example, if we see alliteration in the first page itself, we can see in the first stanza away and away. It's an alliteration and it's a repetition also. And in second line also the hours, the day. So the alliteration and repetition both. Now over here, now in the second stanza, they and the where they harness the swift reindeer. So here we can say the alliteration but not the repetition. Embellishment, we all embellishment is that like for example in the first stanza we can say, and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. It's a single line itself, but it is divided into the two parts, and a connector is also there, that so it is known as embellishment. And in the third stanza we can also see, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. It's a single line, but if we say that they tell them a curious story, I don't believe this true. These both are different, they are not interlinked with each other. Hyperbole is anything that agar like she's looking beautiful, we can say that you are looking nice, you can looking nice, but we say अरे वाह तू तो बहुत अच्छी लगती है, तारों के जैसे चमक रही है, तो दैट इज हाइपरबोल, किसी को बड़ा चढ़ाकर बोलना, दैट इज हाइपरबोल. हाइपरबोल इफ अगर हम देखें तो इधर हाइपरबोल यूज हुआ है सेकेंड 66 पेज नंबर के फर्स्ट स्टैंडा पे. She looked at it and though it seemed too large to give him away. अगर वो लार्ज भी लगा लेती, अगर ये लार्ज वर्ड भी लिख देता, लार्ज सेम लार्ज टू गिव हिम अवे, तो हम भी समझ जाते कि हाँ थोड़े उसको बड़े लग रहे थे केक. लेकिन ही रोट टू लार्ज, मतलब कि वो हाइपर बोल है. Anaphora. Anaphora is the if the starting words of two or three different lines are the same, then we say, and in the continuation, then we say it's an anaphora. Like for example, in the page number 66 itself, we can see in the third stanza the second and third line, and rolled it flat and baked it thin as a wafer. Over here and are the same starting letters of a sentence, so we can say it's an anaphora.
Simile, we all know, it's a comparison by using a like or as. Where is simile? Simile is on the page number 67 and on the first stanza, which was, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Black as a coal in the flame is a simile. And rest of the poetic devices we can find in the chapter, you can also find in the chapter. And if another if another poetic device is found, please write in the comment section below. Thank you.